ओके, मैनू पहला ये दसो, स्पीकिंग की गल करदा थोड़ी जी, ਤੁਹਾਡੇ जो किन्नू अपना क्यू कार्ड की लेंथ ਵਧਾਉਣ 'ਚ प्रॉब्लम आती है, हथ खड़े करो। सो एक या तो क्यू कार्ड की लेंथ ਵਧਾਉਣ 'ਚ प्रॉब्लम आती है, या फिर आइडिया सोचने 'ਚ प्रॉब्लम आती है। एक हिसाब नाल सेम ही है, आइडिया नहीं आंदा, क्यू कार्ड की लेंथ नहीं ਵਧਾਉਣੀ, ठीक है। इहदी एक बड़ी वड्डी टिप है। पहला तो मैं तुहानूं दसदा सिंपल जिहा एक तरीका वा कि तुहानूं किसी भी क्यू कार्ड का आइडिया आ जाए, ठीक है। जो आपां ऑलरेडी गल कीती, पहलां उहदी गल करदा, फिर एक जबरदस्त टिप दिंदा। तुसीं ना कोई 5 चीज़ां, कोई इहो जिहियां 5 हॉबीज, 5 एक्टिविटीज चुन लो जिंदे बारे तुहानूं पता है। क्लियर है? कोई 5 चीज़ां, जरूरी नहीं हो कि हॉबीज ही हो, जिवें तुहाडे शौक हो, जिवें किसी नूं बाइक्स का शौक हो सकदा, तुहाडे कोल बाइक बारे रिलेटेड नॉलेज हैगी, मैनूं मूवीज का शौक आ, बुक्स का शौक आ, वीडियो गेम्स का शौक आ। क्लियर है? इस चीज़ का जिवें एग्जाम्पल लगा लो कि तुहाडे कोल कुकिंग का शौक है, तुहानूं हैगा कोई कुकिंग वाला इत्थे शौकीन, झूठ नहीं मारना, जिन्होंने शौक है कुकिंग का। तुसीं ना जो घरे जाके कदी तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते होगे कि नहीं, तुसीं घर जाके ना कुकिंग बारे लिखना, उल्टा पुल्टा जो मर्जी, जो मन चाहे। तुसीं कुकिंग कित्थों सीखी, किन्ने सालों तो करते आ रहे जे, सब तो वधिया चीज़ की बनाते जे, सब तो पहली बार की बनाया, आखिरी बार की बनाया, किहड़ी चीज़ तुहानूं खाना सब तो वधिया आंदा वा, किहड़ी चीज़ तुहानूं बनाना पसंद नहीं हैगा, किहड़ी चीज़ औखी, किहड़ी चीज़ सौखी, किहड़े मसाले यूज करते, सब लिखो। छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सेंटेंस, बेसिकली ये सोचने लई कि मैनूं कुकिंग बारे की पता। क्लियर है? फिर तुहानूं कोई भी टॉपिक आ जाए, तुसीं कुकिंग पा देनी विच। टॉपिक आ गया एक परसन जिहदे नाल तुसीं गल कीती होवे, वो परसन शैफ ही, उन्हें मैनूं कुकिंग बारे दस्सिया। मेरे स्टूडेंट है कि हरमनजीत सिंह, वो ना क्रिकेट खेलते ही प्रोफैशनल। मैं उन्होंने कहा तुहानूं कोई क्यू कार्ड आ जाए, तुसीं क्रिकेट बारे पा देना। वो कहंदे मैं ना गया विआह ते, क्यू कार्ड आ गया वैडिंग। उन्हें कहा मैं विआह ते गया, उत्थे मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली भी आया है। मैं उनके नाल गल की, उन्हें मैनूं आ समझाया विच क्रिकेट की चीज़ पाती। क्यों? क्योंकि जे तुहानूं कुकिंग का शौक आ, फिर तुहाडे कोल कुकिंग नाल रिलेटेड वोकैबलरी भी होगी। जिवें कुकिंग, तड़के की इंग्लिश की हुंदी है? सर तड़का, आई डिड तड़का फॉर द वेजिटेबल्स। नहीं ना, तड़के की इंग्लिश की हुंदी है? सर असीं इंग्लिश च नहीं ना तड़का लांदे, असीं तो पंजाबी लांदे वे, सही है ना? पर नहीं, तड़के की इंग्लिश इकट्ठियां करो वोकैबलरीज, आर्काइव बनाओ एक अंदर, टैंपरिंग, तड़का, ठीक है। क्लियर है? लूण मिर्च पाना, सीजनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई सीजनड, सेकंड फॉर्म, आई सीजन द फूड विद सॉल्ट, पेपर, जेडे भी मसाले तुहाडे के, चिली पाउडर। क्लियर है? सही है ना? फाइन। नाम याद रखो, चिली पाउडर हो, धनिया, मेथी, जो भी है सब इन्हें नाम याद रखो, जो तुहानूं कुकिंग पसंद है, तुहाडे कोल वोकैब होनी चाहिए। गार्निशिंग, जिवें कि गार्निशिंग की हुंदी है, जो बना बनू के उत्ते पाए धनिया नहीं कर देने पुदीना, तो बेसिकली उत्ते धनिया पाता, उन्होंने कहते गार्निशिंग, मतलब उन्होंने सोहना करता है, कैटरीना कैफ बनाता उन्होंने, सही है नहीं, थोड़ी सुंदरता दे। क्लियर है? होर की हुंदा वा? केक की कीता जांदा वा? बेक कीता जांदा। क्लियर है? फ्राई चीज़ां कीतियां जांदियां, बारबीक्यू कीतियां जांदियां चीज़ां, ठीक है। केक बेक कीता जांदा वा, चाह की कीती जांदी? सर पीती जाती, चाह हो जे, ठीक है, कॉफी हो जे, ठीक है, भावें शराब हो जे, ठीक है। की हुंदा वा? इनू ब्रू किया जाता, ठीक है। फिर अपने को वर्ड आ गया इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी, ये सब वर्ड्स की है, कुकिंग नाल रिलेटेड है ना। इस तरह आर्काइव इकट्ठी करो। मान लो तुहानूं शौक है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी नाल रिलेटेड वर्ड की हो गए, पर उहदे विच आप करो मेगापिक्सल्स, रैम, इंटरनल मैमरी, एक्सपेंडेबल मैमरी, जिन्हों चिपसेट, ठीक है, केड़ा प्रोसैसर यूज करते पे उहदे विच, प्रोसैसर स्नैपड्रैगन, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसैसर, जो भी। क्लियर है? प्रोसैसर केड़ा वा तुहानूं पता होना चाहिए, केड़े केड़े प्रोसैसर, मतलब सर्च कर लो जे तुहाडा टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट हैगा तां। प्रोसैसर होर की हो सकदा वा? कंप्यूटर्स वाली साइड ते ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, अल्ट्रा एचडी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दूसरी चीज है क्यों अपने आइडिया लंबा करने लिए किया, तुहानूं ज्यादातर आ जांदा वा कि हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, तुहानूं किहो जिहा फील होया। ते गुड वोकैबलरी, गुड फीलिंग बारे पहले ही वोकैब इकट्ठी कर लो, ठीक है। आई फेल्ट इनविगोरेटेड, आई फेल्ट रीजुविनेटेड, आई फेल्ट एक्साइटेड, रीजुविनेटेड, REJUVENATED, रीजुविनेटेड मतलब रीफिल्ड विद एनर्जी, ठीक है। थ्रिल्ड, अमेजिंग, ओवर द मून, ऑन द नाइन्थ क्लाउड,
ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਦੇ ਵੀ ਵਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਬੋਰਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਡਲ। ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਟੈਰੀਬਲ, ਡਿਪਰੈਸਡ, ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੈਡ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਵਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦੋ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ 100 ਚੋਂ 90 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਗੇ, 10 ਚੋਂ 9 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੇਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੀਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ your favorite piece of art ਲੋਗੇ, I like to eat गोलगप्पे, my favorite dish is राजमा चावल, I don't like आलू बड़ियां। नहीं। क्लियर है? जो मर्जी भी नहीं बोल सकते। फिर जे मान लो तुम्हें क्यू कार्ड आ गया, क्यू कार्ड आ गया ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट piece of art कोई, या फिर an art piece of art you like, piece of art ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, what it is, where you came to know about it, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ piece of art ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ came to know about it, ਤੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ why you like it। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਐ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਆਰਟ ਪੀਸ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ ਪੀਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਟ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਨਾ ਆਰਟ ਪੀਸ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਪੀਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟਿਸਾਈਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਂਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, या कोई नाम चक लो, डॉक्टर चिंटू प्रसाद मेहरा, कुछ ही कर लो। मतलब चिंटू नहीं बेसिकली, पर समझ गए ना, कोई नाम कर दो, आ ताड़ी पेंटिंग होगी। फिर वही गल, वेयर यू नो अबाउट इट, तुहानू किवें पता लगा उस चीज बारे। ये भी बड़ी बार आंदा वा, पक्का ही रख लो कि मेरे दोस्त ने मैनूं दस्सिया आ चीज दसी। मैं तुहानू सब तो वड्डा सीक्रेट दसदा, क्लीयर आ, किसी भी क्यू कार्ड नूं लंबा करन दा दसांगे रहना, तो ध्यान दो, सब तो वड्डा सीक्रेट आ पास्ट दी गल करे करो। कोई क्यू कार्ड आ जाए ना, पास्ट की गल करो। पहला पास्ट चले जाओ, जो मैं छोटा हूं, जिवें आ गया व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पक्का रख लो आइडिया। मेरे फादर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय फादर यूज्ड टू पेंट अ लॉट, ही यूज्ड टू पेंट every day and I used to sit and watch him. Sometimes he painted of things that I told him, he would bring my imagination into real life. सही है? And since that time he took me to many museums. And since that day, I have been very interested in art. I have seen many paintings. But I remember my favorite painting. But if I talk about now, my favorite painting is this. Past चल जाओ, तानू इंट्रो बनाने की टेंशन नहीं, तानू कोई चिंता नहीं। पास्ट च बोल दो मेरे फादर पेंटिंग कर देंगे, क्लियर है? तानू टॉपिक आ गया कि एक सलाह तानू किसी ने दी होवे। पास्ट चल जाओ, when I was a child, I was very naughty.
ठीक है, वेरी मिस्चीवियस, वर्ड लिखो नॉटी। आई वॉज वेरी नॉटी, वेरी मिस्चीवियस। आई वॉज ऑलवेज अप टू समथिंग। अप टू समथिंग मतलब कुछ ना कुछ खुराफात मेरी चलती रहती माइंड में, ठीक है। आई हैव ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम शेनैनिगन। शेनैनिगन की ਹੁੰਦਾ? शेनैनिगन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ। I was always up to something. I would always, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ used to, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ would। ਜਿਵੇਂ I used to be very naughty, I would always be up to something, I would always be indulged in some shenanigans. People would advise me every day. My mother would scold me, beat me sometimes for all the things that I did, and they would advise me every day, and I didn't listen to anyone. But as I kept on growing, I became a calmer person. I became a more reasonable person. And I remember recently, my father gave me this advice. होते तरीका ना ईजी है कि नहीं? एक क्यू कार्ड कटो, गूगल करो एक क्यू कार्ड। मैं तुम दस दूं क्यू कार्ड आ गया एक फील्ड ऑफ साइंस। फील्ड ऑफ साइंस ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ। पर आप शुरू कितना ही नहीं करोगे आई लाइक मेनी टेक्नोलॉजीज बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय फेवरेट टेक्नोलॉजी दैट इज मोबाइल फोन्स। नहीं आ लाइन नहीं बोलनी, आप फिर पास्ट में जावांगे। व्हेन आई वाज अ किड the school taught us all the subjects. They taught us physics, chemistry, biology. I was very interested in biology myself. I loved it, dissecting insects and stuff. I remember one day they took us to biology lab, and they made us look through a microscope. That day was amazing. I looked through the peel of an onion and there was a whole new universe there. So many small creatures that I could not see with my naked eye. Physics kar lo. I remember we were taught physics very nicely. We had an amazing teacher. His name was Dr. Rupinder Prasad. Okay. And he didn't teach us through textbooks. He used to bring physical models in the class. And it was very fascinating as a young child for me. I was very interested in physics. But if I talk about the present time, I have my major interest is in technology. Yeah. When I was a child, I had a great interest in chemistry. I was very fascinated by mixing chemicals and creating a new compound altogether. I remember one day I had an experiment. It was an exothermic reaction. I almost lost my face. I almost lost my eyebrows at the time. My teacher saved me. It was an exothermic blast. Right? Reaction. After that day, I stopped learning chemistry. I was like, okay, it is done. And I shifted my interest to technology. कुछ भी बोलो नहीं हो रहा। Father दे जो, my father was a science teacher. My father used to teach in a school science, and he used to teach science to me at home as well. And his teaching methods were amazing. He used to sit by me and make me do my homework, and he explained all the concepts beautifully. I loved science because my father was such a nice teacher. I loved all the things, physics, chemistry, biology, everything. But if I talk about now, कुछ भी बोल लो, सही है ना? एक क्यू कार्ड कटो, स्पोर्ट्स आ गया मान लो, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यू कार्ड ही पास्ट बारे आ गया। एक स्पोर्ट्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕਹ ਦੋ when I was very young, I used to play in the street with my friends. We used to play some games like hopscotch or catch me if you can or hide and seek, chiclets. But as I kept on growing, I remember we would have great fun. It was golden era of my life. We would all get together and we would all decide whose turn it would be. It was amazing. But as I kept growing older, I started having more interest in football. फिर अपना क्यू कार्ड बोलो फुटबॉल ते एंड ते जाके जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ क्यू कार्ड आ गया ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਕਰ ਦੋ। I still love football. Whenever I get some time, I like to play it and I feel 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? क्रिकेट बारे वोकैबलरी हो सकती है विकेट्स, पिच, बॉलिंग, स्पिनर, फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन, फील्डिंग, सिक्सर, बाउंड्रीज, एम्पायर, थर्ड एम्पायर, LBW, रन आउट, स्टंप्स, है ना वर्ड सारे। एक कोई स्पोर्ट चक लो, उनके बारे पता कर लो, सर्च ही कर लो
एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट यूट्यूब सर्च कर लो, एक वीडियो देखो हो गया, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਦਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੁਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਭ ਮਿਲ ਜਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਊਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਯਰ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ यूज्ड टू टेक मी टू many fairs, many festivals. I would sit on his shoulders and he would take me everywhere. We have very big festivals, we have huge festivals in India, and there are so many places where we can eat, there are rides where we can go, and I remember those were the golden days of my life. There was no festival that we missed. My father used to take me everywhere. But as I grew older, I started celebrating less and less, going less and less. I became an introvert, more of an introvert person. But I still like Diwali as a festival a lot. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ I wish I could turn back time to those days. But as I grew, I became an introvert and I started going out less and less. ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਫ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ, when I was a child we used to live in a very small house. Yeah, we had only one room, we all used to sleep together. It got very congested, I had very little space to play, and ever since that day I had this dream of an ideal house, a dream of what a kind of house I would like to have. सही है, clear है ना। आज ही आ दो, इस तरह ही कर दो। हाउस है ना, my father was an architect when I was a kid. He used to bring his work home and I saw him design so many buildings. I would watch him, he would design buildings and he would ask me sometimes what color I wanted on the wall or what kind of thing I wanted on the house. And he used to design them, 3D architect. It was amazing experience of my life. And by seeing those houses, I developed this image of my ideal house as well. एक चीज फड़ लो जी हमेशा बोलनी। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।